Hello everyone. So we are now with part 2 of UPSC prelims answer key, and this part is mainly dominated by science and general science questions. So let's get started. So first question, which is the 21st in series C. uh, Question 21st is water can dissolve more substances than any other liquid because option A, it is dipolar in nature. B, it is a good conductor of heat. It C, it has high value of specific heat. D, it is an oxide of hydrogen. So answer in this is it is a dipolar in nature. Next question is 22nd question. With reference to street lighting, how do sodium lamps differ from LED lamps? So statement 1, sodium lamp produce light in 360-degree, but it is not so in the case of LED lamp. And statement 2, a street light sodium lamps have longer lifespan than LED lamps. This is bit, you can easily guess that this statement cannot be right because LED has really a long span of life. So you can guess here easily that it can be a wrong statement if you don't know much about this question. So third statement is the spectrum of visible light for sodium lamps is almost monochromatic, while LED lamps offers significant color advantages in street lighting. So here answer, if you know that two statement is incorrect, so option D and option B has eliminated. So option B left with the option A and C. So here we only need to know the statement 1 about statement 1 and statement 2. So we can guess easily that here's answer will be option C 1 and 3. So next question is 23rd questions. What it is, the term ACE2 is talked about in the context of a genase introduced in genetically modified plants, development of India's own satellite navigation system, radio collar for wildlife tracking, spread of viral diseases. So ACE2 is talked about. Here answer will be spread of viral diseases. So 23rd answer is D, spread of viral diseases. Next question we have is 24th, and 24th question is by bisphenol A BPA, a cause of concern is a structural key component in manufacture of which of the following kind of plastics? Low density polyethylene, polycarbonate, polyethylene terephthalate, and polyvinyl chloride. So here answer will be polycarbonate. This year science is more about general science than artificial intelligence and machine learning and all such technologies, developing technologies. There is very or no question upon that. Those part or used to be easier to solve than this one. It needs a very basic knowledge of science from that NCRTs and all that. So next question here is triclosan considered harmful when exposed to high level of for a long time is most likely present in which of the following? So option are food preservatives, fruit ripening substances, rescued plastic containers, and toiletries. So triclosan considered harmful when exposed to high level for long time. Where it presents, most likely presents, it presents in toiletries. So answer here will be D. जो अगला क्वेश्चन है वो है 26th, और 26th क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स? सो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो है उसको लाइट ईयर्स में क्यों मेजर किया जाता है, उसका रीजन हमें बताना है. सो ऑप्शन ए, डिस्टेंस अमंग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डज नॉट चेंज, लाइट ऑलवेज ट्रेवल in a straight line,
speed of light is always same. It is the reason that speed of light always same. All other things can change, but speed of light always remain the same. So next question we will have 27th question. We adopted parliamentary democracy based on the British model, but how does our model differ from that model? It's polity question. So here answer state what statement say a as regards legislations, the British Parliament is supreme or sovereign, but in India, the power of Parliament to legislate is limited. This statement seems correct because in Britain there is no written constitution which can limit power of Parliament there. There only Parliament supreme. Whatever law they make, it's become means like a it's a it makes supreme them supreme because they are not limited by any constitution written constitution as in India. So this statement seems correct. Next, in India, matters related to constitutionality of the amendment of an act of parliament are referred to the constitution bench by the Supreme Court. Though this statement is based on the how you interpret that, though few questions related to constitutionality which are appealed by the people or anyone in the court, in the Supreme Court, in for that Supreme Court do refer to constitutional bench, but not all matters are refers to constitutional bench which are related to constitutionality. So there is a bit of risk in making it right. So here option 1 will be the safe option to say that it is right. So next question is 28. With reference to the union government, consider the following statements. N. Gopalaswamy Ayyanagar committee suggested that a minister that a and a secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it. Next statement, in 1970, the Department of Personnel was constituted on the recommendation of ARC or Administrative Reform Commission 1966, and this was placed under the Prime Minister's charges. If you know that Department of Personnel was placed under the Prime Minister, and it was constituted in 1970. So here are many clues to say that this both statement here are correct. Next question is right to privacy. This is almost in news in since 2018 or 19, if I say so, is protected under which article of the Constitution of India. तो जो राइट टू प्रिवेसी है उसको किस आर्टिकल के तहत प्रोटेक्ट किया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है ऑल दैट. So it is protected under Article 21, right to life and liberty and all that. And next question is 30th question. Consider the following statement. In India, there is no law restricting the candidate from contesting in one Lok Sabha election from 3 constituency. That there is extreme statement. You can guess easily that it can be wrong. If you don't know that, you can guess it that it is wrong. So option 1, keep it like a wrong statement, because there is a law of Representation of People Act which restrict people or member of parties to contest from 2 or 3 or whatever the law may say, but there is a law that, so this statement is wrong. If you don't know, you can eliminate it on its extremities. In 1991 Lok Sabha election, Shri Devi Lal contested from the 3 Lok Sabha constituencies. So this statement, if you don't know, you can leave it aside. Next statement is, as per the existing rules, if a candidate contests in one Lok Sabha election from any constituency, his and her party should bear the cost of by-election to the constituencies vacated by him or her in the event of him or her winning in all the constituency. So it is wrong. If you remember, now by-election is going on, so whatever the expenses for
by election it is take up and take up by the election commission, not by the party, because rule allowed them to contest from two seats, and if they won both they are allowed to, and they have to resign from one place and to keep their one seat, keep it with the one seat. So यहाँ जो है वो इलेक्शन का जो खर्चा है वो इलेक्शन कमीशन ही उठाता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सो हम अगर इसके ऑप्शन देखें, सो स्टेटमेंट वन इज़ ओनली टू, ओनली वन एंड थ्री एंड टू एंड थ्री। सो हमारे को पता है दो और तीन, एक और तीन गलत है। सो एक और तीन गलत गया, तीन यहाँ है तो ये भी गलत हो गया। सो यहाँ स्टेटमेंट टू ओनली विल बी द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास वेजिटेशन। 31st question. The vegetation of savanna consists of grasslands with scattered small trees, but extensive area have no trees. The forest development in such area is generally kept in check by one or more or a combination of some conditions. Which of the following are such conditions? So burrowing animal and termites, fire, grazing herbivores, seasonal rainfall, soil properties. So if we have to grow trees in savanna or grasslands, then what should be the condition there? What should be the conditions there? So here statement 2, 3, 4 are correct. So next question जो है वो है 32 question number 32. With reference to the water of on the planet Earth, consider the following. So धरती पे जो पानी है उसके रेफरेंस में हमें ये स्टेटमेंट देखनी है। तो द अमाउंट ऑफ वाटर इन रिवर्स एंड लेक इज़ मोर देन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर इज़ मोर देन द ग्राउंड वाटर। सो यहाँ जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन रिवर एंड लेक्स इज मोर देन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। नहीं, ग्राउंड वाटर इज मोर देन रिवर एंड लेक्स वाटर। और जो आइस कैप में है वो पोलर आइस कैप में है, और ग्लेशियर में है वो ग्राउंड वाटर से ज़्यादा पानी है। सो दैट्स ट्रू। सो स्टेटमेंट टू विल बी हियर करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 33rd क्वेश्चन क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट मोरिंगा ड्रमस्टिक ट्री इज ए लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री। सो क्या मोरिंगा एक लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री है या नहीं है? आगे देखते हैं। तमरेंट ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। क्या तमरेंट जो ट्री है वो साउथ एशिया में एंडेमिक है? In India, most of the tamarind is collected as minor forest produce. India export tamarind and seeds of moringa. Seeds of moringa and tamarind can be used in production of biofuels. अब यहाँ 5 स्टेटमेंट दी गई है और आपको सही बतानी है कि कौन सी सही है। जो इसमें से सही है, अगर आप ये गेस कर सकते हैं कि मोरिंगा इज़ नॉट अ लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री। So यहाँ 1, 2, 3 all 3 statement will go. A, C, D will eliminated easily if you know first statement is wrong. So here answer will be 3, 4, 5 with by just eliminating one option, that is one statement 1. Next question is 34th. The black cotton soil of India has been formed due to द वेदरिंग ऑफ। सो ब्लैक कॉटन सॉइल किसकी वेदरिंग के वजह से फॉर्म होती है? सो ए ऑप्शन ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, फिशर्स वॉल्केनिक रॉक, ग्रेनाइट एंड सेचिस्ट, शेल एंड लाइमस्टोन। सो हियर आंसर विल बी द ऑप्शन बी फिशर्स वॉल्केनिक रॉक। सो जो ब्लैक कॉटन सॉइल है वो वॉल्केनिक रॉक से ही बनी सॉइल है, इसका जो बेस मटेरियल है वो वॉल्केनिक रॉक ही है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है 35th क्वेश्चन। सो 35th क्वेश्चन क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू एंड बैक टू अगेन साइंस, बीच में थोड़ा इकोलॉजी आ गया था और
कुछ क्वेश्चन पॉलिटी के भी थे। सो फिर से साइंस के विद रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। वैक्सीन काफ़ी न्यूज़ में है तो इसके क्वेश्चन आने ही थे। ऑब्वियसली अगर किसी ने ये सोचा होगा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में आएंगे तो वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड होंगे। Consider the following statements. Genetic engineering is applied in the development of these vaccines. Okay, so we have to see whether it is correct or not. Next statement is bacteria and viruses are used as vectors. So ये दोनों ही statement correct है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन। सो जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन है उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग ही अप्लाइड होती है और बैक्टीरिया और वायरसेस को यूज़ किया जाता है एज अ वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 36, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेरिडिटरी डिजीज, हेरिडिटरी जो हमको पेरेंट्स से पास ऑन होती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी prevented by mitochondrial replacement theory either before or after in vitro fertilization of egg। जो इसकी शुरू की स्टेटमेंट है, फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टेटमेंट, वो करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट काफ़ी कंफ्यूजिंग है कि आइदर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। सो यही हमको देखना होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, ए चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज एंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर। ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रियल जो डिजीज़ होती है वो मदर से ही मिलती है, ना कि फादर से। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इजीली गेसेबल एक सही स्टेटमेंट है। जो पहले में है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है, बट बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो हियर 1 and 2 ऑप्शन सी करेक्ट। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, Bolgard 1 and Bolgard 2 technologies are mentioned in the context of। जो बोलगार्ड, अगर आपको बीटी कॉटन एंड बीटी ब्रिंजल और उस चीज़ के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आपको इस चीज़ का आंसर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। सो लेट्स सी द ऑप्शन। अ क्लोनल प्रोपेगेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस एंड ऑप्शन डी प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर। अगर आपको पता है बीटी कॉटन एंड बीटी ब्रिंजल है ऑल दैट, तो वो आप इजीली गेस करेंगे कि इसका आंसर ऑप्शन बी है, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स। सो आंसर बी विल बी द राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड डिपेंड्स मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। area of the hole in the lid, statement 2, temperature of the flame, weight of the lid, select the correct answer using the code given below। So here we have to look, the area of the hole होता है lid में, अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम क्रिएट होगा, और टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगा, अब अगर हम कुछ चीज़ पकाने को रखते हैं और ज़्यादा टेम्परेचर में रखते हैं तो ऑब्वियसली वो जल्दी पकेगी, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। और वेट ऑफ लिड, सो वेट ऑफ लिड इज़ डिपेंड, इट्स अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग हियर कि वेट ऑफ लिड का क्या फ़र्क पड़ सकता है। द टेम्परेचर एट विच फूड कुक्ड डिपेंड्स मेनली अपॉन, क्या इसका कोई खाना पकाने में फ़र्क पड़ता है कि अगर भारी लिड हो जिसको हम ढक्कन बोलते हैं तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। और सो इट्स अ लिटिल बिट, बट हियर आंसर विल बी 1 and 2। दैट थर्ड स्टेटमेंट इज़ बिट कंफ्यूजिंग, सो फॉर मी आंसर इज़ 1 and 2। ये ऑप्शन, ये जो आंसर है ये गलत भी हो सकता है, सो आई विल कीप इट इन अ confusing, that a confusing problem, so I'm not sure whether it's correct or not, but let's see। Next is bacteria, consider the following: bacteria, fungi and virus, which of the above can be cultured in artificial synthetic medium। तो जो वो थ्योरी चली थी कि भाई चाइना ने वायरस क्रिएट किया है और कोरोना वायरस, आई थिंक इफ़ यू नो साइंस you will be easily, you can easily say that
that is not a correct news. It's a propaganda, because virus cannot be cultured in synthetic or artificial lab. That is they need a host, a livable host, like we and human or animal or any kind who is livable, who. So for here, not going into deep discussion here into that China and all that, here we can say easily that virus cannot be cultured in the artificial or synthetic medium. So option D will be eliminated easily. So answer will be here 1 and 2. As a UPSC student, you should not fall in that propaganda or trap of new channels and all that. Next question and last question. Consider the following statements. Adventurious advent, adenovirus, sorry for interruption. So last question जो है वो, consider the following statement. Adenoviruses have single-stranded DNA genomes, whereas retroviruses have double-stranded genomes. Next statement is common cold is sometimes caused by adenovirus, whereas AIDS is caused by retrovirus. So second statement is correct, and so we have to answer that option B is the answer here. First statement is not correct here. So thank you for this. So this part is over. We will be come up with next part, and with last part we will give you a PDF of this question paper with answers. So thank you for watching this. Thank you.